Good morning, students. In today's class we are going to learn about writing a chemical formula using a crisscross method. So for writing a chemical formula, first of all you have to learn the elements with their symbols and valences. I have shared the list of elements, very common elements, along with their symbols and valences and what type of ion they form in the class. So you have to learn that list, rather you have to cram that list by heart. So for example, to begin with, I have mentioned the names of some compounds over here and we'll be making their formulas one by one. Let's start with aluminium oxide. Now first of all, I'm going to write the symbol of this aluminium ion. Aluminium element has a symbol of Al and its valency is 3+. So this is the aluminium ion. Now similarly, oxide ion is O2 negative. So what we are going to do, find a common factor that could divide these both valencies, right? So अगर हम देखें 3 और 2 में कुछ common नहीं है, they both are prime numbers, तो इनका कोई common factor नहीं जिससे हम इनको divide करके we can change them into shortest form. So they already are the shortest form. Positive and negative charges, they cancel out each other. Whenever there is a compound formation, always remember one ion is positive and the other ion is negative, right? So that is why the compound is formed. These are the ionic compounds basically. तो अभी हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया और वैलेंसी में हमें कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड, वी आर गोइंग टू राइट द चार्ज और द वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड एट द right bottom of aluminium, which we call subscript, and similarly the valency of aluminium we are going to write at the right bottom of the oxide. So this is the formula for aluminium oxide. But the very first thing is the symbol should be correct, the valency should be correct, and then we have to find a common factor between these two valencies, and after finding a common factor we have to divide these two numbers to reduce them to short form, and then we are going to write by using crisscross method. This is the second compound, calcium oxide. Similarly, we are going to do it. Calcium has a valency of 2+ and oxide has a valency of 2-. And then by using the crisscross method, we are going to write calcium and oxygen symbols first, and then we'll be writing their valencies after reducing them to shortest form. Now here we can see that calcium has 2+, oxygen has 2-. That means in both these valencies 2 is a common number. So if we divide these two valencies by 2, we will get 1, 1. So no need to write 1 here, because if we don't write this 1 subscript, it is understood that calcium oxide is having a formula of CaO. So whenever there is some 1 involved in this formula, we don't write 1, we don't show it, because it's understood that the compound exists because there is 1 atom of calcium and 1 atom of oxide, right? So this is the way we write the formula. The very important thing to note over here is that in all these formulas we have to mention the positive ion in the name as well as in the formula. Always while writing a chemical formula, you should keep this in mind, that it begins with the positive ion, whether the name or the formula both begin with the positive ion. Now third one is calcium carbonate. Calcium again has a symbol of Ca with valency 2+, and carbonate is having a symbol of CO3 with valency of 2-. Using this crisscross method, let's see whether we can divide their valencies the common number. Yes, we can, because they both are having 2 numbers and the common factor is 2. Again, when we reduce it to shortest form, it comes out to be 1. So it's simple to write calcium and carbonate. If we write 1 at the bottom of calcium or 1 at the bottom of carbonate, it hardly makes any sense. So we just leave it like that. To calcium carbonate formula is CaCO3. Now number 4, aluminium sulfate. Aluminium की valency है 3+, sulfate is having a valency of 2-, SO4 2-. And this is the way we write. First we write the symbols, then we check out that is there any common factor between these two valencies. No, these both are prime numbers, no common factor is there. That means these numbers are to be written as such in the subscript of the opposite ion. तो अपोजिट आयन के अपोजिट सिंबल के हम सबस्क्रिप्ट में इनकी वैलेंसीज को लिखेंगे. तो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2 एंड सल्फेट के नीचे आएगा एल्यूमिनियम का 3. नाउ हेयर वन थिंग
that I'm going to make you understand is that because sulfate ion is having a subscript number of 4 already. So अगर हम 4 के साथ 3 लिख देंगे विदाउट एनी डिमार्केशन, विदाउट एनी ब्रैकेट्स, तो इट विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि 4 के साथ 2 लिखने का मतलब हो जाएगा 4 × 2 भी मान सकते हैं या 4 + 2 भी मान सकते हैं. तो हमें किसी भी आयन का फॉर्मूला जो है इंटैक्ट रखना है, उसको मिक्स नहीं करना है. तो वी यूज़ ब्रैकेट्स एंड देन वी राइट द वैलेंसी ऑफ द अदर आयन एट इट्स सबस्क्रिप्ट. ठीक है. अगर कोई ऑलरेडी फॉर्मूला में कोई नंबर है, सबस्क्रिप्ट है एट द बॉटम, राइट बॉटम ऑफ द एटम, तो हमें उसको डिफरेंस देने के लिए, उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरे की वैलेंसी लिखने से पहले उसको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देना है. दिस रूल यू हैव टू लर्न. नाउ नेक्स्ट इज सोडियम फॉस्फेट. सोडियम हैज़ द प्लस चार्ज, +1 only, and phosphate has 3 negative valency. So again it's very simple, there is no common factor in these two valencies, so we are going to write 3 at the bottom of sodium, right bottom, and phosphate like this, because sodium's valency is 1, so there is no need to mention this 1 at the bottom of phosphate. So this is the simplest formula. Coming to carbon monoxide. Now carbon has like 2 valencies. First is 2+ and another is 4+. It's called amphoteric element. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है. लेकिन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन में हम कार्बन की 2+ वैलेंसी को यूज़ करते हैं एंड ऑक्साइड की वैलेंसी ऑब्वियसली 2 नेगेटिव होती है. तो देन यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड हम 2 विल कैंसल आउट बिकॉज दे बोथ हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 2. सो सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज CO, राइट. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने कार्बन की 2+ वैलेंसी को यूज़ किया. यू कैन चेक योर लिस्ट ऑल्सो. आई हैव मेंशन दैट कार्बन एग्जिबिट्स 2 वैलेंसीज, 2+ and 4+, right. Now moving on to the next compound, it's sodium chloride. Sodium chloride is the common salt that we eat in our everyday life. तो हम जो घर में अपने नमक यूज़ करते हैं, that's sodium chloride. So sodium has plus charge and chloride ion has minus charge. They both have valencies of 1 only. That means 1 is the common factor in both. So no need to mention 1. It's the simplest formula is NaCl. Now next one is sodium acetate. Sodium has a valency of plus, Na+, and acetate is CH3COO-. यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में. वो ट्विस्ट ये है कि एसीटेट जो है एक ऑर्गेनिक आयन है. अभी तक हमने जितने भी नेगेटिव आयन्स पढ़े हैं दे ऑल वर इनऑर्गेनिक आयन्स. ऑर्गेनिक आयन्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरल चीज़ों में मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं ऐसे कंपाउंड्स. तो उन कंपाउंड से जो हमें आयन्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक आयन्स. तो जब हम ऑर्गेनिक आयन के साथ किसी इनऑर्गेनिक का कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते हुए जो नेम है उसमें तो हमेशा पॉजिटिव आयन ही लिखा जाएगा पहले, सोडियम एसीटेट. बट व्हेन वी राइट द फॉर्मूला तो हम पहले नेगेटिव आयन को लिखेंगे एंड देन वील बी राइटिंग द पॉजिटिव आयन. तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं. ऑर्गेनिक आयन अगर ये नेगेटिव भी है तो पहले नेगेटिव आयन लिखा जाएगा एंड देन द पॉजिटिव आयन विल बी रिटन. सो दिस इज़ द ओनली चेंज व्हाइल राइटिंग अ कंपाउंड ऑफ एन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आयन, राइट. तो यहाँ पे हमने एसिटेट को पहले लिख दिया, दो इट वॉज नेगेटिवली चार्ज, एंड सोडियम को लिखा. बोथ ऑफ देम वर हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 1 दैट कैंसल्स आउट. सो सिंपल फॉर्मूला इज CH3COO-Na. नाउ लेट्स प्रोसीड विद जिंक एसिटेट. जिंक की वैलेंसी है Zn2+, एसिटेट की वैलेंसी है CH3COO-. अगेन बिकॉज एसिटेट इज़ एन ऑर्गेनिक आयन तो हमने पहले इसका नाम लिखा CH3COO, देन वी रोट जिंक. अब जिंक की वैलेंसी 2 थी, एसिटेट की 1 थी, तो इस केस में हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू राइट 2 ऑफ जिंक एट द बॉटम ऑफ एसिटेट. तो अब क्योंकि ऑलरेडी एसिटेट के आयन में CH3 नंबर इज़ ऑलरेडी देयर एज अ सबस्क्रिप्ट, तो हम इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एनक्लोज कर देंगे विद इन ब्रैकेट्स एंड देन वील राइट द वैलेंसी ऑफ जिंक. और जिंक के बॉटम में जो एसिटेट की वैलेंसी आनी थी वो एज सच रहेगी क्योंकि इट वॉज 1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जिंक एसिटेट. नाउ द लास्ट वन इज कैल्शियम फॉस्फेट. Calcium has a valency of Ca2+, and phosphate PO4 has a valency of 3 negative. Again the valencies are not having any common factor, तो हमने क्रिस क्रॉस मेथड को यूज़ किया. एंड PO4 की जो 3 नेगेटिव थी इट गोज़ एट द सबस्क्रिप्ट ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम की 2+ जो थी इट गोज़ एट द सबस्क्रिप्ट ऑफ
phosphate, but because phosphate was already having a subscript number of 4, so just to differentiate that number, we enclose it in the brackets and then we write the valency of calcium at the right bottom of the phosphate ion. So this is the way you write the chemical formulas of the compounds. But first and foremost thing is that you have to learn the symbols with valencies by heart, and then for practicing to write the formulas you have to mention the names of the compounds like I started my work with. जैसे कि मैंने शुरू किया था, मैंने पहले सारे कंपाउंड्स के नाम लिख के रखे थे इस लिस्ट के ऊपर, एंड देन विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स आई ट्राई टू मेक द फॉर्मूलाज, और जब मैं फॉर्मूलाज लिख लूँगी देन आई कैन टैली माई आंसर्स विद द लिस्ट गिवन बाय द टीचर. Okay, this is the way you can practice to write the formulas. And in the next class we are going to learn how to balance a chemical equation or what is a chemical equation. Thank you.